free Kavita's earbuds. Well everybody, in this video I'm gonna show you some kickboxing workout. Well, usually when you would love to do kickboxing workout, you just think that, oh my god, you should go and join some classes for kickboxing especially. You don't have to do that. I'm gonna show you how you can do kickboxing and how you can learn kickboxing at home. And you can practice anytime, anywhere. Well, so in this video, this is the basic one. So we'll be doing some basic exercise so that you get prepared for some good boxing and some good kicks. Alright, so here we start with kickboxing workout basics. So just stand like this, your feet apart, and a little bit you have to bend your knees and push back and just that's it. If you can't do fast, just do it slow. Don't move like this, okay? Typically just boxing, okay? Breathe out so that your core portion becomes tight. And then you can do it faster and faster, right? Whoop. You can do this in the beginning, say about from 15 to 20 seconds. Okay? And after this, you can start a little bit of jumping. But make sure how you're jumping so that you get more charged up, your energy level goes high. Alright? And then or you can do this. Take a step ahead, boxing and back. Or you can also do these are the variations you can do for your boxing. Just when you do boxing, just punch with the force. Alright, so these are some variations, but make sure it should be proper boxing, okay? And your thumb should not be like this, it should be a proper one, so that once you do the boxing, you do the punching, it should not get hurt, okay? So So for the kicks, we'll start with some basic things, and that is the squats, okay? So just keep your hands like this and do the squats. And then you can turn your squats and do little challenging. These are some warm-up exercises for your kickboxing. You can do this warm-up for about overall 15 to 20 minutes. Video number 2. In the earlier video, I've shown you some punching practice, and in this video, I'm going to show you how you can practice for kicks. Alright, so let's get set for some real kicks. Okay, so let's get started out. Come on. Yes. Let's do some bit of warm-up, but make sure for kickboxing, you have to watch first my earlier video, part 1, so that you can do some practice for punching, and in this video, you can learn some kicks, alright? So, for kicks, let's get set. And make sure, while doing this warm-up, you should not bend your knees, okay? Just keep the leg which is straight, the knees should not bend, especially this leg, okay? So keep this leg straight. Otherwise, you'll get your knees damaged. Just be straight. You can do this for about a minute, alright? And then you can start practicing kicks, front kicks. 1, 2, 3, 4, 5. Make sure don't kick like this, okay? Kick high, alright? This was front kick. You can practice for the side kicks. Get back and back, alright? Well, this was the side kick, and at the same time you can kick front and at the back.
to the front and back, front, back, front, and then back, front, back, front, kick back, and kick. So these are few kicks you can practice at home so that in the next video you can join me for actual kickboxing. Right? So punch and kick. In the first video we have shown you how to punch. In the second video we have shown you how to kick. And in this video I'm going to show you how to do kickboxing. Alright? So well everybody, this kickboxing you can now learn at home and practice at home. Especially today's world is very important. Especially you ladies out there, you need to be really powerful, okay, to keep yourself safe. And at the same time, it's the best form of workout. So you can keep yourself fit. Everybody, whether you're men or women, this is the best form you can keep yourself fit with some kickboxing. So here we'll be doing boxing, some punches and kick together. Right? So here we start. But make sure don't forget to do some warm up and some fast punches. Keep this core portion tight, right? When you punch. Alright, so here we start now. Keep your shoulders straight. Alright, and now start some real kickboxing. Alright, so first you can do boxing and then kick. Boxing and then kick. Then punch and kick. Punch and kick, punch and kick. Right? This is the front punch and kick. Similarly, you can do sideways, right? Punch, kick, do this. In the first video, we have already practiced some punches. So just punch and kick, punch and kick, punch and kick, punch and kick, right? Punch and kick, punch and kick. Front punch and side kick, front punch and side kick. The third one is again, but in the sideways. Give punch and kick. Side punch and side kick. What? With the side. Punch and kick. Punch, kick. आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे फास्ट तरीका फैट बर्न करने का और अपने आप को फिट और हेल्दी रखने का। मैं जानती हूँ आप ऑफिस में होते हैं, आपको ऑफिस की भागदौड़ होती है तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, या तो अब स्कूल भी शुरू हो गए तो आपको बच्चों को तैयार करना होता है, स्कूल भेजना होता है, घर के काम करने होते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है। आपके पास 45 मिनट्स तो क्या, आपके पास हाफ एन आवर भी नहीं होता है, लेकिन आपको फैट बर्न करना होता है। इसके लिए क्या करें, तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे फास्ट तरीका, द क्विकेस्ट फैट बर्निंग कार्डियो क्लास। बट रिमेंबर ये लेवल 1 है, तो आप लेवल 1 को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम आपको ले जाएंगे लेवल 2 पे। बट लेवल 1 में वार्म अप के बाद आपको सिर्फ 15 मिनट तक जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी वो एक्सरसाइज करनी है, नॉन स्टॉप करना है आपको। 15 मिनट नहीं तो आप 10 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं, बट आफ्टर दी वार्म। सो हियर वी स्टार्ट विद द वार्म अप। हम वार्म अप से शुरुआत करेंगे ताकि आप लेवल 1 पर जा सकें। आपको याद होगा वार्म अप हम हेड टू टो करते हैं, फ्रॉम योर neck, front and back, shoulder rotations, then complete hand rotations. इसके बाद में waist के लिए bending, side bending, front bending and backward bending, front and back. इसके बाद में आपको स्टार्ट करना है अपना कार्डियो ब्लास्ट। यस, ये है लेवल 1 का कार्डियो ब्लास्ट। तो आपको 15 मिनट तक मैं जो अभी आपको मूवमेंट्स बताने वाली हूँ वो आपको 15 मिनट तक करते रहने हैं वेरिएशन के साथ। मैं आपको सारे वेरिएशंस यहाँ बताने वाली हूँ, इसमें सभी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। सो 15 मिनट में आप टोटल फैट बर्निंग एक्सरसाइज यहाँ पर कर सकते हैं। बट रिमेंबर आपको रुकना नहीं है, 10 मिनट से शुरुआत आप कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर 15 मिनट्स। यस, 15 मिनट्स इज इनफ। Jumping jacks,
keep going. Yes, you can start with 10 minutes. 10 मिनट शुरुआत कर सकते हैं, रुकना नहीं है. आप जा सकते हैं 15 मिनट तक और 15 मिनट में आप देख सकते हैं कि आप कितना सा फैट यहाँ पर बर्न करेंगे. Just 15 minutes. सारे दिन में आपको सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं. इस तरीके से आपको 15 मिनट तक सिर्फ अलग अलग वेरिएशन, जो मैंने अभी आपको वेरिएशन बताया, आपको सिर्फ जंप करते रहना है और आप बन सकते हैं स्लिम एंड अट्रैक्टिव. यस, फिर आप ऑफिस जाएं, चाहे आप घर की भागदौड़ में हो, यू कैन बी हेल्दी एंड अट्रैक्टिव ऑलवेज. फास्ट फैट बर्निंग लेवल 1 के बाद हम आप पहुंचे हैं लेवल 2 पर. यस, आप पहले लेवल 1 को प्रैक्टिस कर लें और जब आपको लगता है आपकी बॉडी के अंदर स्टैमिना और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों आ गई है, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं वार्म अप के बाद में लेवल 2. या आप चाहें तो आप लेवल 1 और लेवल 2 को दोनों को मिक्सअप करके आप साथ में कर सकते हैं. एंड जस्ट टेक 20 मिनट्स और 15 मिनट्स. आप चाहें तो 20 मिनट्स कर सकते हैं, पर यस 15 मिनट्स आर मोर देन इनफ. यस, सो हम करेंगे आज लेवल 2 फास्ट फैट बर्निंग कवितास योगिक्स वर्कआउट. यस, इसे आप वहीं पर भी कर सकते हैं. स्टार्ट हम करते हैं वार्म अप से. चाहे लेवल 1 हो लेवल 2 हो, वार्म अप बहुत जरूरी है आपके जॉइंट्स और मसल्स को ओपन अप करने के लिए, वार्म करने के लिए. तो आपको याद है हम हेड टू टो हम वार्म अप करते हैं. For your shoulders. नहीं करी है या नहीं देखी तो आप हमारा वार्म अप एक्सरसाइज का वीडियो देखें. उसके बाद नाउ यू ऑल आर सेट फॉर द लेवल 2 fastest fat burning Kavita Nalwa workout. So let's start with level 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. आप 10 टिप्स से शुरुआत कर सकते हैं. तो आपको दोनों आप याद रखिए, अगर आप एक पैर से अगर 10 रिपीटेशंस कर रहे हैं, दूसरे पैर से भी आपको 10 ही करना है. करें then you can do the variations. या तो आप 5 से शुरुआत करें या आप 10 से शुरुआत करें. Then on the sides. One side. इससे आप साइकिल चलाते हैं इस तरीके से. मैं साइड से बता रही हूँ आपको साइकिलिंग की तरह से करना है. तो इन सारी एक्सरसाइज को आप 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक आप कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, 5 मिनट भी अगर आप करते हैं तो विच इज अगेन यू लूज गुड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ फैट. ये आप बहुत अच्छा खासा फैट बर्न करते हैं. एंड द फास्टेस्ट वे टू burn fat level 2 की एक्सरसाइज. फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने लेवल 3 के. यस, द फास्ट कार्डियो. यस, द फास्ट फैट बर्निंग वर्कआउट जो हम आपको बता रहे हैं लेवल 1 लेवल 2 और अब हम आ गए हैं लेवल 3 पर. सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट बस. इसमें आप ढेर सारा फैट बर्न करेंगे और बन जाएंगे स्लिम एंड अट्रैक्टिव. यस, यू हैव टू ट्रस्ट मी. एंड ट्रस्ट क्या करना, आपने खुद करके ट्राई किया होगा. जब लेवल 1 और लेवल 2 किया होगा तो आपने अपने आप में फर्क महसूस किया होगा, जिससे आप ऑफिस में कर सकते हैं, इसे आप अपने घर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कर सकते हैं. तो हम तैयार हो गए हैं अपने लेवल 3 के लिए. एंड लेवल 3 जैसे जैसे हम लेवल पर आते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हमारे एक्सरसाइज स्टेप होते जा रहे हैं. सो अगेन आप 5 मिनट कर सकते हैं इसको, लेकिन होता है आपको याद होगा कि हम अपना वार्म अप करते हैं फ्रॉम हेड टू टो. एंड लेवल 3 में आप स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी हाई नी जॉगिंग के साथ. यस, ये आप कर सकते हैं फॉर अबाउट 50 रिपीटेशंस या फिर आप कर सकते हैं कंटिन्यू 1 मिनट. और इसके बाद में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा अप साइड 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4. या आपको जितना स्पीड में आप कर सकते हैं आपको स्पीड में करना है. And then after that, and then squats.
implications of all this. Yes, अगर आप इसे 2 मिनट भी करते हैं तो 2 मिनट में आप अच्छा खासा फैट बर्न कर लेंगे. Yes, you can see that मैं कितना यहाँ पे breathless हो रही हूँ, right? Well, so for more queries, you can reach me on the email ID जो आप स्क्रीन पे देखते हैं. And don't forget, subscribe to this channel. Take care, keep healthy, keep fit.